तो दोनों रेज्यूमे टीयर 2 कॉलेज के हैं, तो कॉलेज डजंट मैटर फॉर मी. गिविंग मी दी कॉपी ऑफ चैट जीपीटी का बना बनाया रेज्यूमे और अमेजिंगली फिल्टर बोल्ड मार्किंग से स्किल मार्क कर रखी है. Hi, welcome back to my channel. So in today's video, we will be talking about data with Rahul Parekh. He is having a very good years of experience and worked in a different roles of data. So he will be giving us the insight like why data is a so important role in today's world and what are the best practices which we have to follow. So if you are a fresher who is facing difficulties in writing the projects in the resume, or maybe you are not able to get your first interview call, so this video is going to helpful for you. So I hope that you will enjoy and have insightful session after this video. So hi sir, thank you so much for taking out your time and joining the session. Okay, hi Manya, namaskar, namaste. How are you doing? And especially, I remember your recent post about ask me anything. So I thought when you were called me and sir podcast ke liye, let's prepare, and I thought yeah, she will going to ask me so much of questions and I have to prepare a lot. So in front of you, I'm thinking that you are my teacher and I will be your student for this particular podcast. But yeah, thank you for inviting me. Thank you so much, sir. ऐसा कुछ नहीं है. It's going to be a very genuine podcast. We will try to cover questions जो कि बहुत ज़्यादा ही ask किए जाते हैं. Since we both are from the data field, so we will try to cover and answer all those questions. Yeah, for sure. As per my 9 years of corporate experience, I will definitely tell you what not to do, especially क्योंकि everyone in the YouTube and in abundance of the LinkedIn content, people know कि हाँ क्या करना है, but no one tells them कि भाई ये नहीं करना है. Let's avoid it and let's focus on it. So yes, definitely I'll provide my good tips. So, sir, first of all, the audience want to know about you, like how you have started your career, and now you are working in a very good company. So, how was your journey so far? So my career of data field, because in data field I have worked data analytics, data engineering, and now technical architect. So I would take it as a name as data field. So my data field started back in 2016. So Manya, I did my bachelor's of technology from Jaipur, Rajasthan, and then I moved to Gurgaon, that hi-fi city with weak English. So I moved there, and from there the journey started. My MTech degree thesis was on especially on the database and data warehouses. So there I learned about कि अच्छा चलो ठीक है, what is database, what's data warehouse, where to store what is. So at that point of time, my study was basically on the graph databases. And to the audience, I would like to tell them that Neo4j, it's a very good tool, and majority of the big MNCs are investing heavily on the graph databases. So yeah, this is the future. By 2030, graph databases would definitely going to increase than the structured and unstructured data. And talking about my, especially from where this all together started. So after MTech thesis, I went to a startup, and then at that point of time, I was not for sure that I will going to work in the startup. So they given me a funny incident. So they gave me one task of programming. Okay? And I started doing some कि अच्छा चलो ठीक है ये programming करना है. At that point of time, you know कि back in 2016 there was not GPT or there was no Gemini. तो वहाँ पे इतनी मोटी the books used to keep. So I simply opened that book and I read and मैं program करने लगा. And it gave me error. So back to back days it started giving me error. So they told me, Rahul, programming is not good for you. Do this thing. And so they started bullying me. So they said कि अच्छा चलो ठीक है ये projector को सही करो. So I literally stand on that particular chair and I was looking at अच्छा चलो ठीक है projector, and I was like नहीं होगा मेरे से. तो I simply next day I went to the office and I told them कि sir, I am not fit for the startup. My personality is not equals to startup. Everyone has their own personality, yes. So my personality is not equals to startup personality. I left that startup job. I came to Rajasthan, and then I started, and my first company was Global Logic. So this is how my data journey got started. Okay, so you have done your
bachelor's and master degree in one go, or there was a gap in between and you were doing some job in No, between there as well? was no gap. So from 2010 to 2014, I did my bachelor's of technology from Jaipur, and from 14 to 16, without any gap, I started my master's of technology MTech from ITM University Gurgaon. ओके बट सर उस टाइम पे तो 2016 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो डेटा का इतना नहीं था. आई एम टू नॉट वेरी रिलेटेड पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट यस मैंने ये देखा है कि 2022-21 से हमने ये चीज़ देखी कि डेटा को हम बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं एंड पीपल आर गोइंग फॉर दैट रोल. सो हाउ यू हैव डिसाइडेड इन 2016 कि आपको डेटा फील्ड में मूव करना है, सिंस यू हैव मेंशन कि आपका स्पेशलिस्ट. As such, see, I was as natural. I was an average student. I was not so-called topper, or I was not sitting at the front benches. Ki haan, everyone, when teacher asked me, sir, I know the answer. I was not that personality, to be very frank. But so how this already started, as I told you, that I did my masters of technology in graph databases. तो वहां से that particular chain got started. ठीक है, because I wrote thesis especially on databases and data warehouse, and my thesis part was how to convert schema data into schema less databases. So this was my 2 years of entire thesis was done. So yes, from there my data journey started. At that point of time, I was not for sure that chalo theek hai, if I did MTech into this, मेरे को इसी में ही जाना. It's not like that. It's simply like things got started attaching to each other gradually. Or when my first job in Global Logic, it was simple. It was on max to max. It was on Excel, not even SQL. My first job was corely on Excel. Okay. So आपका रोल क्या था आपकी फर्स्ट जॉब में, since you have mentioned that it is related to data and Excel? What was the time? My first job in Global Logic was easy to, you can say, associate role. That's it. Not major things we have to do. And we used to sit at the Google building. So whenever I talk about that Global Logic timing, so I always remember those the amazing lunch provided by Google and the hi-fi. You can say that you can make your collar up and you can move around the floor. So this is the way you get some positive feeling when you work in the Google office. And I was very fortunate, Manya, that I got a chance in my first company, that I went to the Google office and I saw that, and I met people who are working in the Google. Though wo baat alag hai ki now I'm not working even after having connects, but that's altogether different part. But that first brick of my career gave a very amazing base to my entire career, which I am here today. Many skills I learned from there only, from Global Logic. Yes, अगर आप अपना करियर का स्टार्ट अच्छी कंपनी से कर रहे हो, that will obviously have an impact on your longer run future. So that is a good thing. Okay, so sir, since we have talking about 2016 where you are in the data field and you are starting Excel, if you compare 2016 to today, what do you see that अब तो Excel only से कुछ नहीं हो रहा है, right? We have a lot of skills which is required. So अगर हम एक normal data associate role भी start करना है, so what do you think, what skills are required now? Now things have changed drastically. मतलब पहले तो if you would have given me, I still remember the answer of VLOOKUP, index match and SUMIF, भाई मान्यता की selected. And now if you give simple कि sir, I know VLOOKUP, I know SUMIF, भाई तो क्या? What you can do for me? Like, if I can ask the VLOOKUP definition in a single, like bare minimum 5 seconds, my GPT will tell me what is VLOOKUP, what's unique in you. So things has changed drastically. Now a time you cannot go with one tool. एक tool से तो भाई कुछ नहीं होना. Very frank, I am saying, I am not going to sugarcoat anything in this particular session of ours. But एक tool से कुछ नहीं होना. We have to learn the tools. But more than tools, we have to focus on the skills. जैसे for example, मैं एक interview ले रहा था recently, and in that interview he told me like in a very fancy way, Rahul, you know what? I know Power BI. मैं बोला अच्छा. So I simply like confused him and simply asked him the dual access का question. So he got confused. And he was like, Rahul, I know Power BI and I have did the certification of that. People are
forgetting that the tool can change maybe after an year. Maybe today, if let's suppose in the Gartner list, Microsoft is doing amazing job and he is at it, this particular Microsoft company is top number one. But what if the new tool company Hex company, HEX, so Hex company is giving a very tough competition to Power BI. So I would highly recommend to those freshers who are already working or you who want to work into the data analytics journey, avoid to be just like, "Yeah, chalo, theek hai, I want to go with this particular tool." Rather than look at the data visualization. If you remember or if you mug up all the things related to data visualization, then for you, Power BI, Tableau, Hacks, they are Also, simple tools. exactly. That's it. Take tools as a tool rather than altogether a big skill, but run after skills rather Yes, than and tools. also बहुत सारी companies में तो even they don't use these third party tool. They have their own visualization tool and own database. So हर जगह पे जाके वैसे भी this is going to change, right? So हमें base knowledge basically लेकर रखनी है how to create data visualization और data visualization को बनाने का idea क्या होता है basically हम क्यों बना रहे हैं उससे हमें क्या end goal show करना है basically data का. That is something which we consider as important and rather than just a tool. बट एज वी ऑल्सो सी दैट फ्रेशर्स को ये लगता है कि अगर हमने SQL सीख लिया और हमने पावर BI सीख लिया, हमने वन शॉट वीडियो कर ली है यूट्यूब की कवर 4 आवर्स की, तो दैट इज मोर देन इनफ. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाइक अगर अभी उनको इंटरव्यू में बैठे हैं नहीं, these avoid 9 rupees course, which is already like we had a chat as well on the Yes. same, that people should avoid कि हाँ चलो ठीक है ट्रेंडिंग ये चल रहा है तो let's pick that. ठीक है, I agree कि whenever there is something, things are trending, you should pick that, and getting the job percentage is much higher if you pick up the trending things. But you have to not forget that the skills will going to definitely work. So let's suppose एक simple से example करते हैं, बात करते हैं. In Excel, ठीक है, Excel में we have COUNTIF, SUMIF, ठीक है, we have substitute function, concatenate कर सकते हो, you can play around with the data on pivot. भाई that, or even in the today's market, if you buy a good laptop of Asus or HP, Dell, so they give that Microsoft product. भाई that Excel is your playground. And many people take Excel very lightly कि अरे यार इसको तो मतलब क्या Excel क्या सीखूं मैं, I will learn Power BI, I will learn SQL and what not pandas, मतलब they are doing into that way. But भाई सिंपल सी बात करते हैं, Excel में अगर you are very good at the, take this as a playground, ठीक है, उस playground में if you play it very well, if you know the formulas, तुम्हें पता है कि हाँ कौन सा लॉजिक कैसे लगेगा, if you have learned the nested if formula, nested if काफी होते हैं, if के अंदर if लगता है, तो if you learn nested if into that Excel, भाई I can assure you that you will perform very well in DAX, you will perform very good in pandas, and even you will be very easy for you to learn specifically Yes. the SQL. But नहीं करना चाहते I लोग, agree. लोगों को लगता है कि Excel is equals to, भाई मैं तो छोटा हो जाऊंगा, मतलब मैं क्यों Excel Exactly. करूं. तो ये मेंटालिटी आई थिंक तुमने तो ऑलरेडी यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तो यू शुड टेक दिस बुलंद आवाज एंड गो फॉर इट. नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करती हूँ. लोग ये बोलते हैं कि विच टूल वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट, हम पाइथन से स्टार्ट कर लें क्या? हाँ, दे डोंट हाँ. अंडरस्टैंड कि अगर आप बेस से स्टार्ट करोगे, आपका बेस स्ट्रांग होगा, आपको इफ का हाँ. लॉजिक समझ में आएगा, तो आपको केस वेन का लॉजिक भी इजीली समझ में आएगा. या अगर आपको डेक्स में भी वो इफ लॉजिक लगाना है या आपको टैब्ल्यू में भी वो इफ लॉजिक लगाना है, सो एवरीथिंग इज सेम, इज जस्ट दैट कि थोड़ा उनका राइटिंग पैटर्न बदल जाएगा, बट लॉजिकल थिंकिंग तो वही रहेगी. तो अगर वो आप एक्सेल से डेवलप कर लेते हो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसे कहीं भी जाके इम्प्लीमेंट कर दो. वेरी हेल्पफुल. एंड आई थिंक कि अगर आपका एक टूल बहुत स्ट्रांग होता है तो दूसरे टूल को सीखने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा. जस्ट दैट क्योंकि आपको बस रिमेंबर करना है कि वो कैसे लिखा जाता है. लॉजिकल थिंकिंग तो ऑलरेडी आपकी बिल्ट हो ही गई है. एंड अगेन द सेम सर्किल अराउंड हियर एज वेल कि आपको स्किल पे ध्यान देना है, आपको लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव करनी है रादर देन ये कि हाँ मैं इस टूल में सुपर हूँ. क्योंकि अगर आपको सब सीक्वल में सब कुछ भी आता है एंड यू कैन नॉट इवन बिल्ड दैट लॉजिक. क्योंकि मैंने लिए तो नहीं है बट मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है. मैंने मीशो का इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कोई क्वेरी मुझे लिखने को दी. दैट वाज अ वेरी इनिशियल टाइम, तो मुझसे वो क्वेरी नहीं लिखी गई. लाइक इट्स वाज अ टफ क्वेरी.
बट उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट टेल मी द लॉजिक अच्छा। मान्या कि कैसे सोचोगे तुम। तो मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बताया हम्म। कि मैं एक सब क्वेरी में ये सोच रही हूँ लिखने का, फिर मैं ये लिखूंगी, फिर मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर मैं केस 1 लगाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि यस, तो ठीक है, लॉजिक इज राइट, क्वेरी तो आप लिख ही लोगे प्रैक्टिस के साथ, चैट जीपीटी से और कहीं रिसर्च करके। एंड दे हैव हाँ कंसीडर्ड वही। मी फॉर दैट नेक्स्ट राउंड एज वेल। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो लॉजिकल बेसिस पे भी आपको कंसीडर करते हैं, रादर देन ये कि आपको बिल्कुल क्वेरी ही लिखनी आनी चाहिए। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई आल्सो कंसीडर। सो सर, जैसे हम अभी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने ये चीज़ देखी कि स्किल्स हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए रादर देन किसी स्पेसिफिक टूल को, क्योंकि हमें लॉजिकल थिंकिंग Yeah. इम्प्रूव करनी है अपनी इन दीज काइंड ऑफ डेटा रोल्स। हम्म। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने अपने इतने लंबे टेन्योर में कॉर्पोरेट के, यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, तो अगर आपके पास कोई भी रिज्यूमे आता है तो सबसे पहले क्या आप कंसीडर करते हो कि उसने कौन सी डिग्री करी है कैंडिडेट ने, या कौन से स्पेसिफिक कॉलेज से किया है, आप उसको मतलब बेसिकली कितना लेवरेज देते हो कंसीडर करते टाइम? That's right, that I have taken multiple interviews in my previous companies as well, and in my current company as well. I'm dealing with the freshers. I'm Mhm. sitting in a proper bench where we all discuss कि अच्छा चलो ठीक है, what should be the criteria for today's drive. ठीक है, तो वी हैव अ प्रॉपर पीपीटी, एंड इन दैट पीपीटी वी डिस्कस कि चलो ठीक है, इस पैरामीटर को वी हैव टू गिव 60% ऑफ मार्किंग, एंड इस पैरामीटर को वी नीड टू गिव 40% ऑफ मार्किंग। ठीक है, ऑब्वियसली ऑल द मैनेजर्स डज दिस एक्टिविटी इन टुडेज टाइम। एंड व्हेन आई सी द रेज्यूमे, सो बेसिकली वी चेक कि चलो ठीक है, आई अग्री कि अभी काफी लिंक्डइन पोस्ट भी वायरल हो रहे थे कि ना कंपनीज हैव स्टार्टेड नॉट लुकिंग एट द कॉलेजेस। यार, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, माना कि टीयर 3 कॉलेज, टीयर 2 कॉलेज से पास आउट, इट डजंट मच मैटर, बट माय डियर फ्रेशर्स एंड माय डियर टू ऑल दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, IITs, बिट्स पिलानी एंड गोवा का देयर इज वन टॉप मैनेजमेंट कॉलेज। सो दीज टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया ना, इसको कुछ यू कैन नॉट इग्नोर देम। मतलब नंबर वन थिंग तो ये कि अगर कोई IITian है, कोई अगर नारसी मुंजी टाइप कॉलेज, या फिर बिट्स पिलानी कॉलेज, बिट्स हैदराबाद, या मैनेजमेंट कॉलेज इन गोवा, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। सो बाय डिफॉल्ट दे विल गेट एन एज, क्योंकि यार दिखती सी बात है ना, इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम IIT, ऑब्वियसली ही डिड सम गुड हार्ड वर्क आफ्टर हिज 12th, तो वी कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, तो पहला चीज तो ये रिगार्डिंग कॉलेजेस, वी डू लुक, अगर कोई टॉप कॉलेजेस है, ठीक है, टॉप कॉलेजेस जैसे कि LMNIT हो गया, दिस IITs, बिट्स पिलानी, गोवा's मैनेजमेंट, सो ऑल दीज कॉलेजेस डज हैव एन एज। तो अगर इफ आई हैव 2 resumes of Manya and Rahul, if Manya is coming from बिट्स पिलानी, by default she will get an edge. ठीक है, तो दिस इज वेरी क्रिस्प एंड क्लियर आंसर, there's no sugar coating I'm doing. सेकंड बात करते हैं कि लेट सपोज अगर मेरे पास अगेन राहुल एंड मान्या 2 resumes आए, एंड अमंग दोज रेज्यूमे मान्या इज कमिंग फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, ठीक है, VLSS कॉलेज, टेक एन एग्जांपल, ठीक है, VLSS कॉलेज से वी हैव मान्या त्यागी फ्रॉम लेट सपोज जयपुर। Again, we have Rahul, and who is coming from tier 2 college. Both colleges are not very well known, but now we will check कि इस दोनों में से who is coming with what skills. ठीक है, यहां पे कॉलेज विल गो टू बैकग्राउंड, कॉलेज का रोल सिर्फ उतना ही था, ठीक है, as per my first point. In this particular example, where Manya and Rahul both are from tier 2, tier 3 colleges, their skill will matters the most. If you are still on this video and you feel that this video is insightful for you, so please don't forget to like, share and subscribe to this channel so that I feel motivated and bring more such videos for you. So I understand that skill will matter. Then how you are comparing those resume on the basis of skills? So are you looking for internship projects? What? हाँ, तो अब बात आती है कि जैसे I have both the resumes open, ठीक है, तो दोनों रेज्यूमे टीयर 2 कॉलेज के हैं, तो कॉलेज डजंट मैटर फॉर मी, स्किल मैटर। अच्छा, अब बात आती है, अब क्या हो रहा है मान्या, इन टुडेज टाइम एवरीवन इज गिविंग मी द कॉपी ऑफ चैट जीपीटी का बना बनाया रेज्यूमे। सो व्हाट वी आर डूइंग, मतलब तुम इमेजिन करो यार, मतलब वी ह्यूमंस आर फाइटिंग विद AI, और वी कैन नॉट लाइक,
अभी देखो, मान्या ने शेयर्ड माय रेज्यूमे, राहुल शेयर्ड मी द रेज्यूमे, ठीक है, बोथ रेज्यूमे आर अमेजिंगली फिल्टर्ड, बोल्ड मार्किंग से स्किल मार्क कर रखी है, दे हैव टॉप 3 स्किल्स, मतलब एवरीथिंग इज वेल प्री रिटन इन रेज्यूमे एंड इट इज फॉर अस. अब तुम इमेजिन करो, फॉर अस हु आर लुकिंग एट द रेज्यूमे, सर पकड़ लेते हैं कई बार तो, मतलब लिटरली सर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, जैसे लेट्स सपोज मान्या ने 34% प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया ईयर ऑन ईयर सेल्स, फिर उसको बोलते हैं अच्छा भाई कैसे पता तुम्हें कि हाउ यू इंक्रीज 34%? सर आई हैव क्लोज द $1 billion डील्स. मैं बोला अच्छा, फिर आगे मतलब यू हैव क्लोज $1 billion डील, देन आई थिंक यू शुड हैव योर ओन स्टार्टअप देन. तो बोलता no sir, actually है ना, my few of the friends are working, are doing this. He told me to put 24%. I thought no, not 24, I will put 34%. मतलब jokes apart, but yeah, so our job, so once we have that both the resume, my job is to go on to the both the LinkedIn profile, both मान्या की LinkedIn profile खुलेगी and राहुल की LinkedIn profile खुलेगी. Second, दोनों का there should be a case study, like majority of the people have started. If not, if you guys haven't started using the GitHub or HubSpot kind of website, so please use them just to showcase the case study. For example, Manya और Rahul both are coming with the good case study of GitHub. तो मैं क्या करता हूं, मैंने दोनों की LinkedIn profile I have open, ठीक है, and I have parallelly open both the GitHubs, और दोनों का GitHub की report I have downloaded, ठीक है. And also one more pointer, GitHub में always give good readme files, है ना, तो better readme file would be, the better it would give the impression to your interview. अब यहां पे मान्या एकदम ग्रे हेयरिश लाइन का डिफरेंस है. अब हुआ ये कि मान्या की भी प्रोफाइल ओपन है, राहुल की भी प्रोफाइल ओपन है, बट जो मान्या की प्रोफाइल है, she has built a project and she also make me understand the project with the help of YouTube video, or not YouTube video, maybe a recorded video. She is explaining me the entire project end to end. तो वहां पे I simply went to that particular video of Manya's and I opened that link. I get to sense what, number one, fake profile नहीं है, number second, how she is communicating, how's her presentation skills, how is she good with these kind of interaction, which is video instructions. There is one good website, Loom, LOOM. So that is very amazing things, especially many companies have already started it by using the Loom. So yes, these are the few pointers, Manya, which I would definitely look for the candidate, or any good interviewer would look for the candidate. Okay, sounds good. और I understand this thing because obviously अब सबको ये चीज तो पता चल गई है कि रिज्यूमे में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, right? Everyone is using ChatGPT and they are having this top mate sessions with people and they are helping with them. But again, आपने वो रिज्यूमे बनाने में ही सिर्फ सारे एफर्ट्स लगाए हैं या यू हैव रियली वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट्स, उसमें भी आपके एफर्ट्स हैं? Yes. So obviously अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करते हो तो वो दिख ही जाता है rather than just creating the CV with those vague numbers. So sir, इसी पे मेरा एक क्वेश्चन है because I have received these kind of questions a lot. हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो there are two types of projects. एक तो लाइव प्रोजेक्ट है जो आप किसी कंपनी में वहाँ आपने किया. सेकेंड इज अगर कोई फ्रेशर है जिसका कोई इंटर्नशिप नहीं है, उसका कोई जॉब नहीं है, उसने एक डमी प्रोजेक्ट किया है, तो डमी प्रोजेक्ट को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, बिकॉज वी कैन नॉट पुट दोज नंबर्स, हम ये सब चीजें नहीं बता सकते हैं, बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन आवर प्रोजेक्ट इन द रिज्यूमे फ्रॉम द फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू? आई वुड से दैट, देखो अब इसमें क्या होगा, लेट्स टेक अगेन द एग्जांपल. तो इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम गुड एक्सपीरियंस, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास तो उसका कंपनी का है एंड ही कैन मे बी इफ ही इज डूइंग 3 things in the company, he can tell कि हाँ I am doing 5 things in a company, which is fine, which is not bad. Till the time you are good in skills, there is no problem. Now there are few people who are freshers. How they will going to have the experience? भाई दिखती सी बात है, पहले मुर्गी आई या अंडा. So in that way, तो how would they would have the experience? तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इसको बोलते हैं 3-step journey. Number 1 step in the case study you have to do is equals to descriptive analytics. Okay. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ you have to do to describe the data. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे उबर ले लो,
ठीक है, टेक नेटफ्लिक्स डेटा, टेक उबर्स डेटा, और टेक एनी गवर्नमेंट वेबसाइट्स डेटा, ठीक है, गवर्नमेंट data.gov पे वी कैन गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री डेटा. तो यहां से ये 3 डेटा सोर्स व्हाट दे विल एक्ट एज अ रॉ डेटा. सिंपल. Once we have the raw data, simple do a descriptive analytics. Simple tell कि अच्छा चलो ठीक है, Uber में why people are taking the Saturday rides most. In Netflix में why these are top 10 recommended movies are there. Or what type questions, why type questions, ऐसे you can solve it. And first thing is descriptive analytics. You will get more number of things around descriptive analytics in Google. सेकेंड, जर्नी का सेकेंड पार्ट है जिसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. ठीक है, वहां पे यू कैन शो इन योर केस स्टडी कि अच्छा चलो ठीक है, आई हैव दिस राहुल उबर डेटा एंड आई नो कि इसमें ये केपीआईज यूज हुई है. वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल इन इंटरव्यू, ये केपीआईज यूज हुई है. इसमें आई हैव नो दैट ओके दिस इज द समरी ऑफ डेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉलम्स ऑफ डेटा एंड दिस इज व्हाट द डेटा इज ट्राइंग टू टेल. ये 4 टाइप हो गया डिस्क्रिप्टिव. फोर्थ में तुम्हें ये पॉइंट में बताना है कि राहुल आई ऑल्सो डिड सम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, विच मीन्स दैट यू हैव यूज्ड सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉडल्स इनटू इट. जैसे सिंपल बेयर मिनिमम सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन. मतलब अगर किसी को एकदम ही बेबी स्टेप लेना है इनटू स्टैटिस्टिक्स और he want to find out, he want to predict something, तो ये दो linear regression, logistic regression are very good starting point. Third and the final step, तब तुम्हारी ये case study complete होती है. The third step is create any simple model. ठीक है, टेस्ट ट्रेन एंड जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. सो ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा के साथ में सिंपल पुट 80-20 का रूल ले लो. 80-20 के साथ में पुट सम ट्रेनिंग डेटा एंड उससे रिलेटेड रिमेनिंग 20% डेटा के साथ में उसको टेस्टिंग करो. एक सिंपल बेयर मिनिमम सा यू शुड क्रिएट वन ML मॉडल बस. तो दिस इज नोन एज 3-step केस स्टडी जर्नी. वेरी लेस पीपल नो अबाउट इट बट आई थॉट it would be good to share it with the publicly. So let's summarize it. Number 1, descriptive analytics you should do. Second, do some predictive analytics. And third is you should create a very bare minimum simple model. And once you get a job, then do give us a treat, Manya and Rahul ko. Definitely. So sir, do you feel that these things we can even mention in the resume as well, जहाँ पर हमने अपना project section बनाया है और हमारा कोई डमी प्रोजेक्ट है, तो वी कैन मेंशन दिस थिंग दैट वी हैव यूज्ड दीस 3 स्टेप्स एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ दैट. इस पे कहावत मुझे याद आई है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और. सो आई यूजुअली अप्लाई दिस. सो अप्लाई दिस पर्टिकुलर, ये सबसे बड़ा बता, बाय द वे दिस इज अ गुड मार्केटिंग एग्जांपल. जैसे इफ यू रिमेंबर, अगर तुम किसी भी शोरूम में एंटर होती हो, जैसे H&M का शोरूम है, ठीक है, यू एंटर इनटू दैट H&M शोरूम, तुम्हें क्या लगता है एवरीथिंग इज इनटू द वन पर्टिकुलर प्लेस? ऑब्वियसली नॉट. एंड दे आर नॉट पुटिंग देयर 10 out of 10 द रेट. सो हर प्रोडक्ट में रेटिंग देते हैं. जो भी अपैरल वेबसाइट्स हैं, दे डू गिव रेटिंग्स टू इट. तो वो क्या करते हैं स्मार्टली, वो करते हैं 7 out of 10 को दे पुट एट द वेरी फ्रंट पेज, वेरी फ्रंट स्टेज व्हेन यू एंटर इनटू द शोरूम, ताकि मेरे 10 out of 10 को तो बाय डिफॉल्ट मान्या विल बाई इट. ठीक है, क्योंकि ये तो गुड रिकमेंडेड है. उनको वो क्या करते हैं, वो एकदम लास्ट में रखेंगे, सो दैट एटलीस्ट मान्या कैन ट्रेवल फ्रॉम द मेन गेट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द H&M शोरूम. क्योंकि बाय डिफॉल्ट मान्या को जो पसंद है वो तो 10 out of 10 हमने पीछे रख रखे हैं. वॉलमार्ट एनालाइजेस 1.2 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा एवरी आवर. और क्यों करता है वो? ताकि वेस्ट कटिंग हो सके और हम एम्प्लॉइज को बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके जब व्हेन ही एंटर्स इनटू द वॉलमार्ट. तो अब सोच रही हो मतलब कितना डेटा को एनालाइज करते हैं, वो भी आवरली यार. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथ, ईयर. सो जस्ट मल्टीप्लाई इट इनटू 8 hours, you get huge. So हाँ, so getting back to the answers. तो जैसे हम जब रेज्यूमे देखते हैं तो प्लीज do not put all the 10 out of 10 things you know on the resume. कुछ चीजें बचाकर रखो and give that surprises when you will go into the first round of interview. हर चीज तुम्हें वहां जाके रेज्यूमे, भाई फिर वो क्लियर बोल देगा यार ये तो तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा हुआ है, व्हाट यू आर टेलिंग मी एक्स्ट्रा.
then what you will say? Mhm. क्योंकि तुमने तो you have put all the 10 out of 10 things into the by serving a good platter of thali of 32 dishes in front of him. ऐसे थोड़ी होगा यार, मतलब you have to have some good dishes in your pockets and take out those good dishes when he started eating that particular platter. तो उनको लगेगा अच्छा इसको तो ये भी आता है, oh this is a good bonus. Everyone likes bonus, even in companies, even in interviews, and so use this. These are known as psychological tricks. The better you use the psychological tricks, the better the chances of yours to getting selected. और बाकी तो read Manya's post of Ask Me Anything. Okay, sir, ऐसा नहीं है. But yeah, I understood what you're trying to say. So we have to explain things in the resume, which is important to get you shortlisted. And when you have to give the explanation of your project, you have to use this. So if you are creating a dummy project, rather than just saying ki 34% of this, 22% of this, it is good if you explain what you have done really, rather than just putting like whatever others are doing. Because अगर वो live project है, so you will be having numbers. But if it is a dummy project, इतने बड़े numbers जो आप quote करोगे, that you won't be able to justify, and it will be sounds very vague when you are giving that interviews basically. Okay, so sir, हमने अभी ChatGPT के बारे में बात करी. We have seen कि people are using it to create the resumes, but that is not that effective because as an hiring person और जो भी resume देख रहा है उसको पता चल जाता है कि that is not a something which is real and fake, right? So what do you think कि using of these AI tool in the best effective way will be? हमें कौन सी चीजों का basically ध्यान रखना चाहिए while using that? See, when we talk about AI and things are drastically moving ahead and people have already started using AI in their work. Even my mummy yesterday prepared a dinner with the help of ChatGPT. So it was Lauki ka thepla. So I have never eaten that in dinner, Lauki ka thepla, but she created it. She used ChatGPT. So even my parents have started using GPT, and mummy loves Gemini. And when she say hi Gemini, so I'm thinking, yaar, humse baat kar lo, you are talking about AI. Okay, so in general, people have started it, but there are few of the things, Manya, that people should aware about when they start working with GPT's model. देखो, एक चैट जीपीटी में यू मस्ट नो एक फीचर होता है एक सिंपल चैट का जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट चैट मोड. मतलब यू सिंपल ओपन दैट चैट आईफोन में और सिंपल यू स्टार्ट चैटिंग, यू हिट एंटर, यू गेट रेस्पॉन्स इन बेयर मिनिमम लेस देन अ सेकंड. उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट चैट विंडो, और यू कैन से सिंपल चैट विंडो. ठीक है, वो हो गया. The second feature, which I believe for us, for data people, this is very important, is known as deep search. ठीक है, डीप सर्च इज अ फीचर which asks चैट जीपीटी के भाई मैं तुम्हें ये पीडीएफ दे रहा हूं, इस पीडीएफ में ये डेटा है, लेट्स से एक फार्मास्यूटिकल डेटा है, फार्मास्यूटिकल रिपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल टेबल है, उसको तुझे एनालाइज करना है, एंड यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट बेटर थिंग्स आई कैन डू विद इट. ठीक है, व्हाट बेटर इनसाइट्स आई कैन. तो पुट दैट पर्टिकुलर डॉक नॉट इनटू सिंपल चैट, प्लीज मत करना ऐसा. एंड यू विल से कि यार चैट जीपीटी तो बेकार आंसर देता है. अरे you are giving the chat GPT the different direction to go. He should not have to go with that particular PDF and he is going with the default chat. कुछ नहीं होगा. You will get a simple bare minimum answers. Rather than use the deep search window, deep search button. So deep search window क्या करता है? It will take approximately, जब मैंने use किए थे last PDF को analyze करने के लिए, it took around 20 minutes. To 10 minutes. हाँ, पेड में तो इट विल टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. अगर फ्री वर्जन है तो इट विल गिव द आंसर मच बेटर क्विक, मे बी 5 मिनट्स से लेस में भी टाइम आंसर दे देगा. बट आई हैव यूज्ड बोथ पेड वर्जन ऑफ जीपीटी एंड फ्री वर्जन. तो यूज दिस पर्टिकुलर फीचर. आई वुड हाईली रिकमेंड, स्पेशली टू द डेटा पीपल, टू नो दैट व्हेन टू यूज द डीप सर्च थिंग. रिसर्च में, पीडीएफ जनरेशन में, इन जनरल डेटा एनालिटिक्स में, इनसाइट क्रिएशन में. ठीक है. थर्ड ऑप्शन मान्या इज नोन एज द वेब सर्च. ऐसे कौन से 3 ट्रेंडिंग टूल्स है विच आर डूइंग अमेजिंगली जॉब इन द मार्केट टिल टुडे. सो विच इज डूइंग व्हाट? आई एम डूइंग रियल टाइम एनालिटिक्स, है ना. तो whenever you want a real time results from GPT, use third feature known as web search. तो PDF को लेके web search में नहीं जाना, PDF को लेके
We do not have to go to default chats. PDF ka, they are meant to be analyzed to have some deep research for 5 to 25, 30 minutes. Use deep search, real time, use web search. In general things like how to prepare Loki ka thepla, simple, go ahead and in general ask GPT default chat. Okay, so basically effective use we should have known, Amazing. because Yes, अगर हम yes. You normal should way से aware करेंगे about तो it. it will be, yeah, otherwise it will be the similar answers for everyone, and that is felt like कि वो real नहीं है. Understood. Also one more thing sir, चैट जीपीटी का हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ इफेक्ट आ सकता है डेटा रोल्स पे, बिकॉज वी हैव सीन इट इज इम्पैक्टिंग अदर रोल्स एज वेल. तो डेटा की फील्ड में बेसिकली इनटू द एनालिटिक्स क्या आपको लग रहा है कि चेंजेस आएंगे? Okay. See, AI is here to take the job roles, and people should very much repeat this particular statement, especially for those who are thinking day in day out, यार AI तो मेरी जॉब ले लेगा, यार ये क्या होगा, यार ये क्या होगा, and in that particular trauma they are not even preparing कि यार ये तो काम यार GPT कर देगा. भाई भाई अगर ऐसा होता तो why would have we should have leave the job and simply close this क्योंकि हर काम तो GPT कर देगा. No, it's not like that. अगर आज भी as I told you deep research में if I am putting the PPT into that, eventually तुम खुद बताओ, eventually who will going to represent it in the front of client? Obviously we, right? Obviously we will going to represent that in front of client. अच्छा चलो representation की बात भी अलग है. For those higher management you can say कि चलो Rahul, you are the manager, you have that right to represent. What if the juniors? नहीं भाई, juniors को if they, I would say, look, go to Naukri and simple search for the AI generalist roles. Simple put, AI engineers jobs in Naukri. Simple put, AI data analyst architect role. भाई you will get amazing results. Even अगर simple data analyst का job role है, they are forced to, even my companies started forcing those people who are working into associate role, भाई AI सीखो, learn AI tools, learn more AI, not just simply use the chat GPT. मेरे को chat GPT आता है बस. No, there's a difference between a chat GPT, between a Grok, between DeepSeek, and between some other XYZ chat GPT model. So start using them. मैं क्या करता हूँ, when I started, how I learned everything in 2024, 2023 में, मैं एक prompt लेता था, I copy paste that, but I have 3 windows. I simply copy paste that same prompt chat GPT में, same prompt Grok में, same prompt DeepSeek में, just to know कि how these three tools are giving me the answers. So this is the very bare minimum exercise you have to do, ki use the different chatbots. And there is one more website which will definitely going to help the juniors. One is simplify.com, SIMPLIFY, simplify.com, and second is careerflow.ai. So simplify and careerflow.ai, these are amazing tools in the market. They are giving direct head-to-head competition to Naukri.com. Even Naukri.com has such a huge database of, especially in India. So these companies are giving very head-to-head tough fight to Careerflow and Simplify. So we are considering कि ChatGPT is going to help you in a way if you will keep on learning that, rather than just sitting with your current role and thinking कि ChatGPT मेरी या AI मेरी job ले लेगा, whatever. So we have to. No, it's simple. It's not here to take jobs. It's here to take job roles. Obviously, कुछ पुराने job roles definitely will going to erupt, and new job roles will come in. Yeah. So basically, we have to continue learning all the new things which is coming into the market. And obviously, corporates में तो there is no point कि आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है. You have to learn and be with the flow, like whatever is going on in the market. So I totally agree with this point. Okay, sir. So I just wanted to take few more minutes of your time. I just wanted to know, like, if from a hiring person point of view, you can just answer this question. If someone is starting now, either to start their career into the data field, or they are just freshers coming out of the college, so what do you think they should know and focus more on right now? Rather than simply scrolling Instagram reels, or rather than saying कि अच्छा चलो ठीक है उसकी job यहाँ लग गई मेरी क्यों नहीं लग रही, rather than doing this kind of activity which especially freshers are doing, I would and even the working professionals are doing, I would highly recommend read.
मतलब कुछ भी पढ़ो डेली का, यू हैव टू फिक्स एटलीस्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स कितना ही होता है यार, मतलब 15 मिनट्स में यू सिंपली टॉक टू योर फ्रेंड एंड दैट टू विल गोइंग टू टेल यू तेरे को पता है मैंने ये कर लिया तेरे को। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, डू सम काइंड ऑफ रीडिंग। Either go with the medium articles, best है, free में you can read good articles from amazing person, or you can follow people like you, like me, and they can read the LinkedIn post which are very raw and which are coming from an experienced person, ठीक है। और second, read books, non-fiction books। जैसे my favorite is Atomic Habits, my favorite book is like You Can Succeed from Shiv Khera। So read these books. This will give you a immense learning. Not देखो हर बार everything is not equals to your career. Your career will grow once you are doing better in your personal life. This is it's a parallel equation. If your personal life is not doing smooth or is not like working well, then definitely your professional life will going to impact. And vice versa, if your professional life is going good, then you will act as a good human being in front of your parents, in front of your wife, and you can play around with the children. So एक balance तो बहुत जरूरी है. So learn, so good read, have a good balance. Your professional life is directly equivalent to your personal and vice versa. And third is have journal. मतलब write करो, कुछ ना कुछ write something. जैसे for example, on every, not day basis, I would say on every week basis, I do write that what are the good things I'm doing and what are the things which I need to improve. So if the things going to improve are again and again coming on every week, which gives me the highlight कि यार इसको तो अब improve करना ही है, it's been 5 weeks, it's been 6 weeks that I'm doing this particular mistakes, and this is the trick. This journaling is the trick from where I got LinkedIn 7,000 followers. I simply write down कि मेरे ये पोस्ट फेक हुआ, मेरा ये पोस्ट फेल हुआ because I have not doing this. I'm simply copy pasting or I'm simply not giving the good results to users. तो फिर मैंने धीरे धीरे I improve myself, and now touch wood, things are going smooth. Okay, thank you so much. Thank you so much for giving this insightful thoughts, and definitely thanks to you. You have invited me and you are doing this amazing job by having the podcast. I wish you that the similar way LinkedIn is equals to 11,000 followers of yours. So those all 11,000 followers should come to visit your YouTube, and my 7,000 followers should also get added into your. So that is equals to 17,000 followers on subscribers on YouTube. So yeah, you are doing good job. Your good skill I have found is, I have observed is that whatever you write, you help people. Not by saying कि चलो यार मैं इसकी help कर रही हूँ, ये मुझे subscribe कर देगा. It's not like that, because we had a conversation multiple times. You are a person who is always go ahead कि चलो ठीक है मेरे को राहुल यहाँ पे and whenever we talk multiple times during our Zoom meetings, you said कि राहुल पता है I went to this college, I am giving the SQL lessons to children, or I am telling them ask me anything, the momentum you have given to ask me anything kind of post. Even I have also copied your idea in one of my posts. So yeah, you are doing amazing job. Keep doing it. You are a beautiful soul, and I wish you all the very best, especially to all people, especially to my followers that follow Manya Tyagi, and support her in her YouTube. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your kind words. And yes, definitely we will follow the same routine and bring these kind of more posts on LinkedIn and more videos on YouTube. So thank you so much. Okay, bye. Cheers. Thank you so much for watching this video, and I hope you have enjoyed it a lot. I will be bringing more such videos super soon, so please stay connected and please subscribe to the channel so that you get notified as soon as we have live another video. Thank you.